Hello everyone, we are going to start the new chapter which is the introduction to microbiology. In this chapter we will cover the tissues. In tissue we will cover animal tissue as well as plant tissue. Then we will also we are going to understand about the tissue culture. Then we will also understood in this chapter we will understand about the agrotourism. Then agribusiness. These are the main content of this chapter that we will cover in this chapter. Okay. So first here we have the can you recall? Can you recall? Says the first question. Which components bring about the important process in the living organism? कौन से components है जो organism में कौन से ऐसे components है जो organism में important process means the life process. Which are the life processes? Movement, then respiration, okay, then sensation, then growth, then reproduction, then excretion, and nutrition. Okay, these are the life processes which are performed in the organism. That's why we are living. Okay, so ऐसे कौन से components है जो इन life processes को perform करने में help करते हैं? So there are main three type of component. First is energy providing. एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट ओके, ये फर्स्ट कंपोनेंट है. सेकंड कंपोनेंट है बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट, और ये है बेटा प्रोटीन. एंड प्रोटेक्टिंग नंबर थ्री है, थर्ड नंबर, और वो बेटा प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट. प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स, और प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स बेटा विटामिन्स. Okay, they are called as vitamins or vitamins. Understood? So which are the component bring about the important life process in living organism? Carbohydrate, protein, even fat also, and vitamins. Understood? Everyone keep replying. Yes, sir. Okay, second question बोल रहा है which is the smallest structure and functional unit of the body of living organism? So the smallest structural and functional unit of all the living organism is called as beta cell. Is called as cell. So cell is the smallest structural and functional unit of the body of an organism. Understood? Keep replying. Okay. Now we Yes, will sir. discuss about the tissues. Many tissues, okay, like many cells, they combine to form tissue. So many cells they combine to form beta tissue. Then different tissues or same kind of tissues will combine to form organs. Then organ combines to form organ system. Organ system, and organ system forms the body of the organism. Forms the body of organism. Likewise हमारी जो बुक है बेटा, बुक में सबसे पहले क्या यूज हुए? लेटर्स कंबाइन होकर वर्ड्स बने. लेटर से वर्ड से बने सेंटेंस से बनते बेटा पैराग्राफ से बनता है लेसन, और बहुत सारे लेसन मिलकर फिर टेक्स्ट बुक बनती है. लाइकवाइज आवर बॉडी भी, हमारी जो बॉडी है ये भी बहुत सारी सेल्स
से मिलकर टिश्यूज बने, फर्स्ट टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बने। ओके एवरीवन, सो व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर the combined form of same or different types of many cells. Okay, so आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उनमें सारी के सारी जो लाइफ प्रोसेसेस है ना, जो हमने यहाँ पर लिखे 7 लाइफ प्रोसेसेस, ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ओनली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये 7 की 7 लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ एक सेल से ही परफॉर्म हो जाती है। ओके, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन का सिस्टम बना हुआ है। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, माउथ से फिर इसोफेगस, माउथ से हो गया इसोफेगस, ओइसोफेगस, ओके, इसोफेगस से हो गया बेटा स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस। ओके, सो इतनी बड़ी एक पाइपलाइन है जहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ओके, सो in multicellular organism, as complexity increases, their body structure and functioning is also becomes more and more complex. That's why in order to perform different types of function or the life processes, we have different types of organ in our body, because human being is the most complex animal on the earth. Is it everyone? Yeah. Yes, sir. So Yes. take a screenshot beta this first. Yes, sir. Done. Okay. Here we have the group of cell having same origin, same structure and same function are called as beta tissue. में टिश्यू क्या है? एक्चुअल में ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारी सेल में भी सेम और डिफरेंट टाइप के सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। मिलियंस ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन, मिलियंस में, मिलियन मींस होता है अपना 10 लाख, सो कई मिलियंस टाइप की और बहुत टाइप की सेल और मिलियंस लाखों करोड़ों सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म these cells are divided into different groups and each group perform the definite function. For example, we can perform movement with the help of contraction and relaxation of the muscles. अगर आपको मूव करना है, स्पीक करना है, रनिंग करना है, किसी चीज को हैंडल करना है, so it is possible due to the contraction and relaxation of the muscles only. Conducting tissue in plant, प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, लाइक दे ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड फूड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके, इज completed with the help of xylem and phloem. So xylem and phloem again a type of tissues. All the function of the body occurs with the full efficient due to the specific organization of the cell and their division of work. Okay everyone, now we will understand the types of tissue. So any Yes. doubt in this part? Any doubt? No, sir. Okay, so now we're gonna cover the types of tissue. हमने टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड किए बेटा। फर्स्ट पार्ट है सिंपल टिश्यू और सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू जो फॉर्म होंगे बेटा वो सेम टाइप की सेल से फॉर्म होंगे। ओके, क्या होंगे सिंपल टिश्यू? सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप के सेल से बने हुए टिश्यूज को हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। But if more than one type of cells are being used for the formation of tissue, then they are called as complex tissue. Okay, so कितने टाइप की सेल, सिंगल है या मेनी टाइप की सेल है जो टिश्यू को फॉर्म करती है, ऑन दैट बेसिस वी हैव टू टाइप्स, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यूज आर epithelial tissue of animal and meristematic tissues of plant are the example of simple tissue.
Example of complex tissue, here we have blood of the animal, xylem and phloem of the plant are the example of complex tissue. Okay, everyone? Yes, Yes, sir. Okay. So now we will discuss about each part one by one. Think about it, में दिया हुआ है, are the structure and function of the bodies of the plant and animal are same? No, because plants are stationary. They require less amount of energy in order to perform all the life processes. But in case of animals, they have to move, they have to perform motion in order to look for the food, search for the food, water, shelter, clothes, etc. for the earning. Is it everyone? Animal have to move from one place to other. That's why they require more and more energy in order to perform other life processes. Is it or not? That's why the structure of plant and animal are different. So let's discuss from the notes what is given here. Plants being sedentary. Sedentary means stationary. They are not moving. Okay, it is called beta sedentary. Most of their tissues are of the type of the give supports only. So plant के जो tissues generally होंगे ना, उनका main काम रहेगा बेटा to support the plant. To support the plant. There are dead cells in some tissues and do not need much attention. सो प्लांट के जो टिश्यूज है ना, वहां पर बहुत सारी डेड सेल्स भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड होता है एंड दे रिक्वायर लेस एनर्जी इन ऑर्डर टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस. ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर्स इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ देयर बॉडी. सो प्लांट की जो ग्रोथ जनरली 3 रीजंस में होती है. एक होता है बेटा रूट का ग्रोथ टुवर्ड द सर्च ऑफ वाटर, ग्रेविटी के कारण और वाटर के सर्च के कारण जो रूट्स है दे विल ग्रोइंग टुवर्ड द इनसाइड द डीप ऑफ द अर्थ. देन द स्टेम इज ग्रोइंग टुवर्ड द सन. ओके, मींस द फोटोट्रोपिक मूवमेंट सनलाइट की तरफ इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ओके, एंड द गिर्थ मीन्स प्लांट की जो मोटाई है ना, ये ऐसे ग्रोथ होती है. ओके, सो एक में उसका डायमीटर इंक्रीज होगा, एक में हाइट और दूसरे में रूट की लेंथ इंक्रीज होगी. सो यहाँ पर जो ग्रोथ है ना, वो स्पेसिफिक पार्ट में ही हो रही है. वे टिश्यू कंटेन डिवाइडिंग द सेल. अब जो ग्रोथ हो रहा है ना, यहाँ पर एक हार्मोन होता है बेटा विच प्रमोट द सेल डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, और वो हार्मोन का नाम है साइटोसिन. As animal have to move from one place to other place in order to search for food, shelter and partner, their energy needs is greater as compared to the plant. Most of the tissues of animal are made up of living cells. So हमारी जो बॉडी की सेल से जो टिश्यूज बने हैं वो लिविंग सेल से बने हुए हैं. Uniform growth occurs throughout the body of an animal and they do not have different dividing and non-dividing tissues. So हमारे जो बॉडी में, एनिमल की बॉडी में जो ग्रोथ होता है ना, ये ओवरऑल ग्रोथ होता है, बट प्लांट में स्पेसिफिक पार्ट में ही होता है. This means that plant and animal have different types of tissues to perform the necessary function. इसीलिए प्लांट और एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होंगे जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट आल्सो. Yes, sir. Now we are going to discuss the animal tissue. Think about it. First we have to cover that. क्या दिया हुआ है? Why can we not see our organ like heart, blood vessels and intestine? Because they are situated inside our body. They are internal organ. That's why we cannot see them. Is it or not? Yes, sir. Yes. So in the body of animal, different organ come together to form the specific function. कुछ organ combine होकर एक कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं.
ऑर्गन लाइक लंग्स एंड ट्रैकिया। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है गैसेस एक्सचेंज करना, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। ओके, then with the help of contraction and relaxation of the sub muscles bring about the function of the respiration. So जो trachea है and lungs है, they both they combinedly work together in order to perform the respiratory system or respiration function. Okay, different tissues perform different function in the organ. Accordingly, tissues are classified into different types. So on the basis of their function, tissues are further classified into following parts. So there are 4 main types of the animal tissue. 4 types के animal tissues हैं. Number 1 is called as epithelial tissue. Number 2 is called as connective tissue. Number 3 is called as muscular tissue. And number 4 is called as nerves tissue. So we have 4 types of animal tissue. So I'm writing here animal tissue के 4 types. Number 1 we have epithelial tissue. Epithelial tissue. Number 2 we have connective tissue. Number 3 we have muscular tissue. And last but not the least, we have nerve tissue. Nervous tissue. Number 1, number 2, number 3, and number 4. Now here the structure is also given. This is the epithelial tissue, the first kind. It is present in the inner lining wall of the stomach, intestine, blood vessels, and upper lining of the body called skin. Here we have the connective tissue. It is the second type of the tissue. Then we have the muscular tissue. It is the third kind. And the nerve tissue, it is the fourth kind. Okay, everyone. And this is the structure. They looks like this. Now we have to discuss all the types of tissue or animal tissue one by one. So again, take a screenshot here. Okay. Do you know, it is very important part we have to cover. Blood is also a type of connective tissue. Blood भी एक type का connective tissue है, याद रखना. It circulate in our body from one part to other part and transport different material like nutrition, waste material, carbon dioxide, oxygen all over the body and from all over the body to the lungs and kidney. For example, it transport oxygen and nutrition to all the cells in the body. Similarly, it transport waste material generated from all over the body to the kidney for the excretion and blood also carried to the lungs for removal of the carbon dioxide. So the total transportation function is performed by the blood only. That's why blood is a kind of connective tissue which is formed by different types of cell. Okay, observe the skin of the back of your hand with the help of magnifying glass. Magnifying glass यानी magnifying lens जिसको हम convex lens कहते हैं. Do you see the closely attached squares and the pentagonal shaped structure of the cell? You will find the shape of the cells like this. Okay? अब इतना डिटेल नहीं दिखेगा, बट आपको ऐसे लाइनिंग्स दिखेगी like this. ऐसे पेंटागन, कहीं हेक्सागन, कहीं ऐसे क्वाड्रिलेटरल, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखेंगे बेटा. कब? जब आप स्किन को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करोगे. इवन नॉट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, आप नॉर्मली भी अगर वॉच करोगे तो यू विल फाइंड सच स्ट्रक्चर. यू कैन चेक ऑन योर हैंड ऑल्सो.
Just do check, you will find the structure like this. Is it everyone? ऐसी सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे सेल दिखेगी आपको आपके पाम के बिहाइंड में, स्किन के ऊपर, इफ यू विल ऑब्जर्व दैट. ओके, दिस इज नथिंग बट द एपिथेलियल टिश्यू. वो जो आपको दिख रहा है वही एपिथेलियल टिश्यूज है बेटा. सो लेट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज द एपिथेलियल टिश्यू. Protecting covering in the animal body are called as epithelial tissue. It is the protecting covering, okay, of the animal body is called as, it is made up of the epithelial tissue. Cell in the tissue are closely packed. जो cells है they are closely packed and form the continuous layer. वो एक continuous layer को form करते हैं. Any material that enters the body फर्स्ट एनकाउंटर्स द एपिथेलियल टिश्यू. कोई भी मटेरियल अगर हमारे बॉडी में एंटर होना है, फर्स्ट उसको हमारे एपिथेलियल टिश्यू से ही एनकाउंटर होना पड़ेगा. ओके, सेल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ अदर अंडरलाइंग टिश्यूज बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन. सो जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम other part of the body with the help of fibrous membrane. The skin, mucous layer of the mouth cavity, inner surface of the blood vessel, wall of the alveoli, etc. They all are made up of the epithelial tissue only. They are made up of the epithelial tissue only. Understood everyone? Yes. Yes. So यहाँ पर दिया हुआ है, use your brain power. What keeps the various organ and organ system separated from each other and how? So अभी हमने जो इसका आंसर यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पे the fibrous membrane. Okay, the fibrous membrane which separate different organ. Okay. Now we will discuss about the types of epithelial tissue. Very important. Okay. So now we are going to discuss about the types of epithelial tissue. So here we will discuss detail about the name of the epithelial tissue, then their appearance, their location, their structure and function. We will discuss one by one for all. So first we will discuss about the squamous epithelium tissue. This is the first type. Okay, squamous epithelium looks or their appearance like this. It is a diagrammatic representation. They locate in inner surface of the mouth, esophagus, blood vessels and alveoli. अभी just हमने देखा था. Okay, इनका structure कैसा बेटा? They have thin, small, flat cells and form the semi-permeable membrane. They allow only the passage of certain or selective particles or molecules only through them. Their function, again, the selective transport of the substance. So ये कुछ selective substance को ही अपने से transport होने देंगे, otherwise no. So this is the squamous epithelium tissue. Second type we will discuss about the stratified epithelium. Stratified epithelium looks like this, as you will see here. It is present in outer layer of the skin. So ये skin के outer layer में present होगी. Many layer of the cells. So ये जो cells होगी बेटा tissues, ये इसकी बहुत सारे layer, as you can see here. 1, 2, 3, 4, 5. Many layers are there. What is their function? They prevent of wearing of the organ and protect of the organ. So ये organ को wearing, tearing and protects from the mechanical shock also, and it protects different organs of the body. Okay everyone? This is the stratified epithelium. Third, we will discuss about the glandular epithelium. This is the third one. It appears or it looks like this, as you can see here. This is the appearance of the glandular epithelium.
they locate in inner layer of the skin. तो ये skin के inner layer में present होंगे. Their structure is like cell contained vesicles packed with the secretory material. यहाँ पर vesicles होंगे, as you can see here, this is the long vesicles, and they are packed with the secretory material. So यहाँ पर secretory glands होती है. See, you can see here, this is the secretory gland जो mucus को secrete करेंगे, sweat को secrete करेंगे. Okay, so these are the sweat glands. They secretes the particular substance called melanin. Okay, due to which the tone of the skin is been decided. Okay, so these are the secretory glands, you can say them. Fourth, very important, columnar epithelium. So columnar epithelium, नाम में ही छुपा बेटा column, so they appears like the column as you can see here. Okay, where they are located? They locate in inner surface of the intestine, intestine के inner surface में जिसको हम mucosa कहते हैं, and even in alimentary canal. Their structure is like column, like tall cell. देखो column के समान long cell, tall cell है. Upper free surface bear folds made up of these cell at the place of absorption. तो इनका जो upper layer है ना, ये वाला part, it helps the process of absorption of the nutrition. Okay, these are nothing but the villi. ये विला है बेटा, विला जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं. ओके, व्हाट इज देयर फंक्शन? सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस. तो ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेंगे जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प होगा, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी करेंगे. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम. नेक्स्ट वी हैव ciliated epithelium, again very important. Okay, they appears like this. This is the structure for ciliated epithelium. They present inner surface of the respiratory tract. They present in inner surface of the respiratory tract. Our time is being over, so let's do it complete fast. Their structure is upper free surface bear the minute hair-like processes, and their main function is push mucus and air forward and keep the air passage free. And last but not the least, we have cuboidal epithelium. Their appearance like this. They located in tubules of the kidney, in nephron, and in salivary gland. Their structure is cuboidal, as you can see here. Their main function is reabsorption of the useful material from the urine. So urine से useful material like water and salt को और electrolytes को absorb करने का काम करते हैं cuboidal epithelium. And they secrete the saliva because they present in salivary gland also. So here student, this is all about the animal tissues. Understood everyone, or any doubt you have here? So here we have completed the first lecture of this chapter. Okay, so we will continue the second lecture in next class. Okay, beta, for the introduction to biotechnology. Okay, bye bye everyone. Bye, sir. Bye, sir.